Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, I have discussed about the ring topology. So in this lecture, I will discuss about the advantages and disadvantages of the ring topology. इस lecture में इस network की जो advantages हैं और इसके जो drawbacks है उस पर हम तफसीली नज़र दौड़ाएंगे, ठीक है। तो इसका पहला जो एडवांटेज क्या है, फ्लो ऑफ डेटा in a circular direction will minimize the chance of packet collision। क्योंकि इसमें डेटा जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इसमें कोलिजन, पैकेट्स की कोलिजन की चांसेस बहुत ही कम होती है बनिस्बत बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी में चूँकि सिस्मा सीडी इस्तेमाल नहीं होता, हर एक सेंडर डेटा ट्रांसमिट करता है विदाउट लुकिंग इनटू द मीडियम, so there is a collision, there is a chance of collision. Here there is no chance of collision because each sender device will send the data only when the data frame, that is data packets, that is token, is available. So if packets a token is not available, then devices will not be able to send the data, so there is no chance of packet collision. Second, unidirectional ring topology provides very high speed. It provides very high speed as compared to the bus topology and star topology. About 16 Mbps to 100 Mbps. Third one is better performance than bus topology when nodes are increased. When the number of nodes in this topology is increasing, then its performance will not be affected. इसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये 4 सिस्टम है, ठीक है, 5 सिस्टम है, ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अब अगर इसमें हम एक दूसरा नोड ऐड करें तो इसकी परफॉर्मेंस पर कोई इतना असर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन ऑफ पैकेट नहीं होता, ठीक है। 4.1 can handle high volume of nodes and network. In this topology, a large number of nodes can be attached with this network. There will be no effect on the performance of this network as compared to the bus topology and the star topology. So considering the volume of the network, it can handle a lot of nodes to be attached with this network. Can handle heavy traffic as compared to the bus topology. Heavy traffic को भी हैंडल कर सकता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसकी स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता और नहीं ये नेटवर्क हैंग हो जाता है। 6.1 प्रोवाइड गुड कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इसकी कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस पर इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन का मीन्स the way in which the message are exchanging of message, दो डिवाइसेस के दरमियान मैसेज का जो तबादला होता है उसे क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन का कहलाता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पर इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है बनिस्बत दूसरी टोपोलॉजी की। मेंटेनेंस इज ईजियर एज कम्पेयर्ड टू द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की निस्बत इसकी मेंटेनेंस बहुत ही आसान है, ठीक है। The 8.1 no needs of network server, just like the server based network where we need a high speed server, so there is no need of server. This network में कोई भी सर्वर नहीं होता, हर एक नोड सर्वर की तौर पर अपना काम करता है, डेटा एक्सेप्ट करता है और फिर रीट्रांसमिट करता है। तो ये जो नोड होते हैं इसमें ये रीजनरेटर भी कहलाते हैं। ये it act like a server, but there is no need for such a huge and big server, high speed high performance server, just like in the server based network. So as compared to the server based network, that's why it is very less expensive as compared to the server based and other hybrid and tree network. Troubleshooting is much easier than bus topology. It is very easy to troubleshoot a network, this network. If fault occur in a cable or a node, it will be easily be detected and will easily be isolated. Let's suppose there is problem in this network, this node, so it will be drop out from this network and we will connect these nodes easily. Or let's suppose there is a problem in this cable, so
it may be replaced by another cable. So it is very easy. Less costly as compared to the other network. It's not more expensive as compared to the other network, that is server-based network and hybrid network and mesh network as well. So all these were the advantages of the ring topology. And there are some drawbacks of this network as well. So there are 4 drawbacks of this network. Breaking in a single cable can cause disturbance of entire network. So if a single cable or segment break down, then or single computer break down, so the whole network will be break down. फॉर एग्जांपल अगर इस कंप्यूटर में इस केबल में कोई मसला आ जाए तो ये सारा नेटवर्क डाउन हो जाता है, ठीक है। इसका ये मेन जो ड्रॉबैक है ये इन यूनिडायरेक्शनल रिंग टोकन मस्ट पास थ्रू ऑल नोड्स। सेकंड ड्रॉबैक इसकी ये है कि जिस डिवाइस इसको डेटा ट्रांसमिट करना हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये प्री टोकन कैप्चर करे। टोकन के बगैर डेटा ट्रांसमिट करना और फिर इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास टोकन हो। सो इस नेटवर्क के लिए ज़रूरी क्या है कि इस नेटवर्क में टोकन मुसलसल कंटिन्यूसली सर्कुलेट करेगा, ठीक है, अदरवाइज कोई डिवाइस डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। द थर्ड वन, द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ एनी नोड इन नेटवर्क इज़ डिफिकल्ट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू add or remove a node in this network. It is very difficult because it will affect the whole network. So its configuration will be rearranged. So it is very difficult. And bus topology and star topology, it is very easy to add or to remove a network. So in this topology, if we add a 6 computer, 1, 2, 3, 4, 5, and let's suppose we want to add this one. So it is very difficult. We will reconfigure the whole network. So it will disrupt the whole network. Or if we want to remove this computer, then it is very difficult process. This is the main drawback. It is much slower than Ethernet network under normal load condition. Under normal load condition, it's low. Its speed is not very high as compared to the real Ethernet network. We will discuss about the real Ethernet network. Ethernet का मतलब क्या है? केबल नेटवर्क जो है ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को लैन पे या वैन पे, लोकल एरिया नेटवर्क पे या वाइड एरिया नेटवर्क पे फिजिकली कनेक्ट करते हैं। तो इसकी निस्बत फिजिकल नेटवर्क की निस्बत लैन हो या मैन हो, इसकी निस्बत जब लोड कंडीशन नॉर्मल लोड कंडीशन पर इसकी स्पीड इतनी नहीं होती जितनी इथरनेट की होती है। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स थे। सो दिस वाज अबाउट द रिंग टोपोलॉजी एंड आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।